Good morning, beta. Sure. Let us try to do some problems related to thermal radiations, beta. उससे पहले एक बार जल्दी से what we'll do is we'll try to revise all the formulas which are been associated with your thermal radiations. तो फर्स्ट फॉर्मूला जो आपने को याद रखना है इसके अंदर बेसिकली किरचॉफ लॉस. रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड. ये मैंने क्लास में नहीं करवाया था. किरचॉफ लॉस लिख लीजिए एक बार. किरचॉफ लॉस क्या कहता है बेसिकली? Emissivity at a given wavelength divided by absorptivity at a given wavelength will always be equal to constant. E lambda divided by A lambda is equals to a constant. The ratio of emissivity of a given body at a particular wavelength divided by absorptivity of that body at a given wavelength is always remaining for me constant. Stephen's loss का net loss, अगर हम लोग net loss लिख करते हैं basically net loss of heat in Stephen's-Boltzmann's law. Stephen's-Boltzmann's law. इसमें क्या होता है? E net will be equal to your emissivity into your sigma and T power 4 minus T naught to the power of 4. T is the temperature of the body, beta. T is your temperature of your body. And the T naught is the temperature of surrounding. It is your temperature of surrounding. This formula is applicable for your ordinary body. जब emissivity आता है तो हम लोग इस formula is applicable for your ordinary body. And E net loss due to perfectly black body के बारे में बात करते हैं. तो emissivity 1 हो जाती है. तो this will be sigma T to the power of 4 minus T naught to the power of 4 आ जाएगा. ठीक है ना? So black body के लिए ये formula होता है basically emissivity उसकी हो जाती है 1. Whereas for the ordinary body, this will be the formula. ठीक है ना? Is it clear? चलिए. और एक फॉर्मूला बेटा जो IC2 में मैंने करवाया था, सोलर कांस्टेंट. सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है रिप्रेजेंटेड बाय S बेटा. S is equals to sigma T power 4 radius of the sun divided by mean distance whole square. Clear? आया सभी को? अच्छा, आया कहां से पूछ रहे हो बेसिकली? देखो सोलर कांस्टेंट आया कहां से, इसका मैं छोटा सा आपको प्रूफ कर देता हूं. देखो सोलर कांस्टेंट इज नथिंग बट इक्वल टू पावर रेडिएटेड बाय द सन पर यूनिट एरिया. पावर रेडिएट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा t पावर 4 फ्रॉम द स्टीफेंस लॉ डिवाइडेड बाय एरिया. एरिया इज 4 पाई इनटू योर स्मॉल r स्क्वायर. ठीक है? So ये 4 pi will get cancelled. R is the radius of the sun. R small r is the mean distance of the sun from the earth. ठीक है ना? तो ये बन गया मेरे पास कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर सिग्मा t पावर ऑफ योर 4. तो इसमें से अगर मैं टेम्परेचर को भी बाहर निकालूं तो भी लिख सकता हूं मैं बेसिकली. R क्या है यहाँ पर? मीन डिस्टेंस. R is your mean distance of earth. Mean distance of your earth कहां से? From the sun. From the sun. ठीक है? And R is the radius of the capital R is equals to your radius of sun. Capital R is radius of your sun. And capital T is your temperature of sun. Temperature of your sun. Surface temperature अगर पूछ रहा है बेसिकली तो T को बाहर निकालो. अगर मैं T को बाहर निकाल रहा हूँ तो T is equals to small r divided by capital R whole square बन जाएगा. This will be equal to solar constant divided by sigma. The total to the power of 1 by 4. So this will be the temperature of the sun. न्यूमेरिकल तो नहीं बनता, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस पूछ लेता तो कभी कभी ये फॉर्मूला क्यों याद रख लीजिए. टेम्परेचर ऑफ द सन अगर निकालना है तो T is equals to small r divided by capital R. Capital R is the radius of the sun. Small r is the mean distance of the earth from the sun. S is the solar constant and sigma is the Stephen's constant. तो the power 4 था, यहाँ पर चले गया तो 1 by 4 हो गया. क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? ये देखो ये मैं यहाँ पर इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ. ये मेरे पास सन.
जिसका रेडियस कैपिटल आर, और इसमें रेडिएशन ऐसा जा रहा है बेसिकली, और यहां से यहां तक है मीन डिस्टेंस है आर, एंड दिस इज राइट नाउ फॉर अवर अर्थ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने भी याद रखना है बेसिकली, स्टीफेंस कांस्टेंट और सोलर कांस्टेंट का रिलेशन। ठीक है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा, ये आपको याद रखना है। फॉर स्पेरिकल बॉडीज, फॉर स्पेरिकल बॉडीज, फॉर स्पेरिकल बॉडीज एरिया हो जाता है 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, तो हीट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रॉब्लम्स बन जाते हैं इसमें से। ठीक है ना बेटा, उसी तरह से रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग में माइनस ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, ये टी टेम्परेचर है बेटा, ए टी टाइम है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, inversely proportional to mass and specific heat C, and temperature T minus T naught. T naught is the temperature of surrounding and T is your average temperature. ठीक है ना, सो और एक पॉइंट भी यहाँ पर रख लीजिए, फॉर स्पेरिकल बॉडीज, फॉर स्पेरिकल बॉडीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो A बाई MC होता है ना, ये कितना होता है देखो, एरिया डिवाइडेड बाई मास इनटू स्पेसिफिक हीट will be equal to, एरिया कैसे लिख सकता हूं मैं, 4 pi into r square divided by mass will be equal to how much work, 4 by 3 pi into your r cube into density rho, because mass is equal to volume into density into specific heat, तो r square और यहां से कट हो गया, तो a by your mc is inversely proportional to radius। क्लियर है, इज इट क्लियर, यानी स्पेसिफिक हीट अगर हम लोग लिख रहे हैं बेसिकली, तो dt बाई और dt जो लिख रहे हैं बेसिकली यहाँ इस फॉर्मूले में, minus of your dt divided by dt is directly proportional to 1 by r into temperature T minus of your T naught। ठीक है ना, into C भी आएगा, isn't it? ये कितना हो जाएगा, 4 पाई भी यहाँ पर कैंसिल हो गया, 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, और स्पेसिफिक हीट आ जाएगा C यहाँ, यानी यहां से मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ, स्पेसिफिक हीट विल बी इक्वल टू, स्पेसिफिक हीट विल बी इक्वल टू, सी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, सी की वैल्यू अगर मुझे बाहर निकालना है बेसिकली, सो यू कैन राइट द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट बॉल। क्लियर है, चलो एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट वाला प्रॉब्लम है बेटा, आपको याद रख लेना। क्लियर है एवरीवन, थोड़ा न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसमें से जल्दी जल्दी से। थर्मल रेडिएशंस, फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, a black body has a wavelength lambda m corresponding to the maximum energy at 2000 Kelvin. Its wavelength corresponding to the maximum energy at 3000 Kelvin will be equal to how much? इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, lambda into T will be, lambda into T will be equal to your constant, यानी lambda 1 T1 will be equal to lambda 2 T2। तो lambda 1 दे रखा है मेरे पास, lambda m इनिशियल टेम्परेचर केल्विन में है, तो डायरेक्टली केल्विन में डाल, that is equals to lambda 2 अपने को निकालना into temperature, next one is given in 3000, यानी ये 3 और ये 3 कट गया, तो lambda 2 will be equal to how much only, lambda 2 will be equal to 2 by 3 times of lambda m। So what is the option I can write for this one? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which is having the minimum wavelength बेटा, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा बेसिकली, अगर मैं एक्सरेज ले रहा हूँ बेसिकली, पहले वाला दिख रहा हूँ, एक्सरेज के लिए, एक्सरेज जो होते हैं ना, दे आर इन द रेंज ऑफ योर 10 पावर माइनस 10 मीटर्स टू 10 पावर माइनस ऑफ 9 मीटर्स, वेवलेंथ नो का वेवलेंथ जो रहेगा एक्सरेज का 10 पावर माइनस 10 मीटर्स टू 10 पावर माइनस 9 मीटर्स हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट रेज के लिए बेटा वेवलेंथ का रेंज हो जाएगा 10 पावर माइनस 7 मीटर्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7 मीटर्स, और गामा रेज के लिए जो होगा, दिस इज आल्सो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर ऑफ माइनस 12 मीटर्स से लेके 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 मीटर्स तक, याद रख लीजिए बेटा एनसीईआरटी पॉइंट्स है। कॉस्मिक रेज के लिए जो रेंज हो जाएगा, देयर इज 10 पावर माइनस 14 मीटर्स टू योर 10 पावर माइनस 12 मीटर्स। अब बताइए विच हैज द मिनिमम वेवलेंथ, बता सकते हैं आप लोग, विच हैज द मिनिमम वेवलेंथ बेटा, कैन एनीवन गिव मी द आंसर, ये 10 पावर माइनस 14 है, ये 10 पावर माइनस 10,
सो सबसे कम कितना दिख रहा है? कॉस्मिक रेस. सो विच इज हैविंग ए मिनिमम वेवलेंथ, मतलब cosmic rays will be having the minimum wavelength. D. Very good. Next question. For a black body at a temperature 727 degrees Celsius, its radiating power is 60 watt and temperature of surrounding is 227 degrees Celsius. If the temperature of the black body is changed to 1227 degrees Celsius, then radiating power will be equal to your how much work? तो ये देखो बेटा, दो टेम्परेचर है बेसिकली, तो यहाँ पर आई कैन अप्लाई द नेट लॉस ऑफ योर हीट का फॉर्मूला, दैट इज एनर्जी E is equals to your sigma temperature of the body minus temperature of the surrounding to the power of 4 into your area. ठीक है ना? तो फर्स्ट वाले के लिए कितना है देखो बेटा, टेम्परेचर फॉर ए ब्लॉक बॉडी, ये जो है ना एनर्जी, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट? पावर. यानी ये जो पूरा है ना, आई कैन राइट दिस वन एज पावर q by t is nothing but energy, that is nothing but of your P close. So that is given as of your 60, that is equals to sigma, और फर्स्ट वाला टेम्परेचर कितना है बेटा? तो 727 है, and radiating and what and temperature of the surrounding is 227. 727 plus 273, ये कितना बन जाएगा बेटा? 1000. This will be your 1000 to the power of 4 minus temperature of surrounding कितना है? 227 plus of your 273. So this will be coming out for me 500 to 27. So this will be your 500 to the power of your ये first वाला. Second case में temperature कितना है? It's been changed to 1277. And the temperature of the body will be equal to T is equals to 1227 plus 273. तो ये कितना बन जाएगा? 1500. तो temperature of surrounding तो same ही रहेगा, that will be equal to 500. So second case के लिए जो एनर्जी लिखेगा, that is nothing but of your P dash, radiating power will be equal to sigma. This is 1500 to the power of 4 minus 500 to the power of 4 आ जाए. तो दोनों को डिवाइड कर लीजिए. This is equation number 2 ले रहा हूँ, and this one I'm taking as equation number 1. So 2 divided by 1 अगर मैं कर रहा हूँ, तो P dash divided by 60 is equals to sigma हो गया ये. This one is 1500 to the power of 4 minus 500 to the power of 4 into your area. Area जो होगा ना बेसिकली दोनों के लिए सेम हो जाएगा. So I'm not writing the area here, I'm not writing the area here. Divided by sigma भी वैसे भी कैंसिल हो जाएगी. That will be equal to 1000 to the power minus 500 to the power. ये वाली और ये वाली भी चल गया, isn't it? यानी कितना बन गया बेटा? P dash divided by 60 is equals to, I can write this one as 15 to the power of 4 minus this will be 5 to the power of 4 क्योंकि 0 0 वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, divided by this will be equal to 10 to the power of 4. ये 2 zeros, ये 2 zeros, इसमें 2 zeros, इसमें 2 zeros, minus this will be equal to your 5 to the power of your. ठीक है ना? अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, you'll get the value of P dash. I'm leaving the calculation for you बेटा. ठीक है? चल. Next one. Which of the following best close to an ideal black body? Pinhole बताया था मैंने. So lamp black is nearly cavity maintained at a constant temperature. This will be the best answer. कैविस में मैंने बताया था कल क्लास में, आप लोग को एक छोटा सा कैविटी होता है, यहाँ पर कुछ पॉइंट ले लेते हैं, रिफ्लेक्टर आपकी लाइट यहाँ पर पड़ेगी एंड रिफ्लेक्ट हो जाएगा. सो कैविटी मेंटेन एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर विल बी एन आइडियल ब्लैक बॉडी. डन. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5. The Wien's displacement law expresses the relationship between wavelength corresponding to the maximum energy and temperature, radiation energy and wavelength, temperature and wavelength, color of the light and wavelength. बताइए कौन सा होगा? फिफ्थ वन के लिए आंसर क्या होगा मैडम? Wien's displacement law क्या होता है? लैम्बडा m into t is equals to some constant है ना, isn't it? So wavelength और temperature यानी radiation energy, product of the absolute temperature of the black body and the wavelength of the emitted radiation at which the emissive power is maximum is always for me constant. What is the best option I can write? Wavelength corresponding to the maximum energy and temperature. ये तो आपको आंसर आता ही है. If lambda m denotes the wavelength at which the radiate emission from the black body is a temperature T Kelvin is maximum, then what is the relation between them? So lambda is inversely proportional to temperature, यानी this is proportional to T power minus 1. ठीक है? So D will be the answer. Direct question. Very good. Next one. Question number 7.
A black body at 1227 degrees Celsius emits the radiations with maximum intensity in a wavelength of 5000 angstroms. The temperature of the body is increased by 1000 degrees. The maximum intensity will be observed in water. Same temperatures दे रखा. Lambda 1 T1 will be equal to lambda 2 T2. Calculation कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा. ठीक है. Next one. A black body is at 727 degrees Celsius. It emits energy at the rate which is proportional to. Energy is directly proportional to T power 4 beta. And E is directly proportional to 727 plus 273 to the power 4 होगा. यानी that will be proportional to 1000 to the power 4. ये डिग्री सेल्सियस है तो आपको केल्विन में लेना है कंपल्सरी. आ गया. चल ये वाला तो अभी करें हम लोग सेम क्वेश्चन. Assuming the sun to have the spherical outer surface of radius r radiating like a black body at a temperature T degrees Celsius, the power received by a unit surface at a distance r from the center of the sun will be equal to your how much? Energy का फॉर्मूला क्या होता है? Energy is equals to sigma. This is T plus 273 to the power of 4. Area will be equal to 4 pi r square divided by 4 pi into capital R square. Isn't it? So this will be equal to how much better? A4 pi gets cancelled. So this will be equal to r square sigma. This will be T plus 273 to the power of 4 divided by capital R square. So which is the best option I can write this one? C. अभी करा था हम लोग Stephen's law, solar constant. Sure. Next one लीजिए. A black body at 227 degrees Celsius radiates the heat at the rate of 7 calorie per centimeter square second. At a temperature of 727 degrees Celsius, the rate of heat radiated in the same units will be equal to how much? Power radiated is directly proportional to T power 4 beta, isn't it? So I can write here P2 divided by P1 is equals to plus 273 करना है इसको. Plus 273 करना है मतलब 1000. 1000 divided by 227 plus this one is 500 to the power of 4. ये 2 0 से 2 0 चले गए. That is 10 to the power of 4 divided by 5 to the power of 4. ठीक है ना. उसको कर लीजिए आप आंसर आ जाएगा. क्लियर. P1 की तो वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है आपको 7. यानी क्या लिखोगे आप? P2 divided by 7 is equals to 10 to the power of 4 divided by 5 to the power of 4. So P2 निकाल लीजिए. That will give me the answer. क्लियर. चल पूरी फॉर्मूले बेस्ड ये देखो बेटा. The total radiant energy per unit area normal to the direction of incident received at a distance r from the center of the star at a distance r whose outer surface radiates as a black body at a temperature T Kelvin. अभी बताया था मैंने बेसिकली सेम कंडीशन. P is equals to your sigma. एरिया कितना हो जाएगा? pi r square into T power 4. स्टार का सरफेस एरिया जो सामने का दिख रहा है, isn't it? तो सिग्मा कितना बन जाएगा बेटा? सिग्मा is equals to your power divided by 4 pi into your r square. पावर की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? पावर की वैल्यू ऊपर डाल रहा हूं. सिग्मा 4 pi into your r square T to the power of 4 divided by 4 pi into r square. 4 pi will get cancelled. So that will be equal to sigma small r square T to the power of 4 divided by capital R square. स्टैंडर्ड फॉर्मूला. चल ये भी आप लोग कर सकते हैं बेसिकली. If radius of the star is capital R and it acts as a black body, what would be the temperature of the star in which the rate of energy production is capital Q? यानी Q is equals to sigma A T power 4 black body के लिए. और टेम्परेचर क्या होता है बेटा? टेम्परेचर ऑफ द सोलर कांस्टेंट में जब लिख रहे हो, सो इट इज Q डिवाइडेड बाय सिग्मा 4 पाई इनटू योर r स्क्वायर. पावर इधर चले गया तो टू द पावर ऑफ कितना हो जाएगा बेटा? टू द पावर ऑफ 1/4. T will be the answer. Clear? Sure. Next one, below. A piece of your iron is heated in a flame. It first becomes dull red and becomes reddish yellow and finally turns to white hot. The correct explanation for the above observation is possible using the Stephen's law, Wick's displacement law, Kirchhoff law, Newton's laws of cooling. बोला बेटा कौन सा will be answer? कल ही बताया था मैंने आपको. A piece of iron is heated in a flame. It first becomes dull red, then becomes reddish, then finally turns into a white hot. So what will be the answer? Wick's displacement. Very good. Wick's displacement law. Next one. Certain quantity of water cools from 70 to 60 degrees Celsius for the first 5 minutes and 54 degrees Celsius in the next 5 minutes. The temperature of the surrounding will be equal to how much? This is a good question बेटा. एक बार आप लोग ट्राई करिए. Question number 14. Question number 14. Temperature difference ले रहे हैं बेसिकली अपन. Theta 1 minus theta 2 divided by T.
is equals to some constant k into average temperature, T average minus temperature of your surrounding. Case number 1, केस नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ बेसिकली। बस कहां से कहां जा रहा है, 70 से लेके 60, 70 से लेके 60 यानी 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में बेटा, 5 मिनट्स में, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के इनटू इन दोनों का एवरेज यानी 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना बेटा, 57 temperature of 60 in the first 5 minutes. The temperature of surrounding ही अपने को निकालना है, यानी temperature of the surrounding will be equal to, this is equation number 1. ठीक है, for the next case number 2, next 5 minutes के लिए कितना हो जा रहा है बेटा, it is going to what temperature, 54, यानी 60 से 54 जा रहा है। So now it is going from 60 to your 54, यानी 60 minus 54, same time दे रखा है 5 is equals to some constant k into 60 plus 54 divided by 2 minus temperature of your surrounding. So this is my equation number 2. अब इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए बेटा, 70 minus 60, this will be equal to how much only 10, isn't it? So कैसे भी 5 और 5 cancel हो जाएगा, a5 cancel हो जाएगा, so that will be equal to 10 divided by 60 minus 54 is right now for me 6, that is equals to a constant भी चले जाएगा, isn't it? तो अब यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, 70 plus 60 divided by 2, 120, 130, 130 divided by 2, that will be equal to how much only, 65 minus temperature of your surrounding, that is nothing but theta s, divided by 60 plus 54 divided by 2, 57 minus temperature of the surrounding. ठीक है, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, 2 5s are 2 3s are 5 by 3, यानी 5 by 3 is equals to 65 minus theta of surrounding divided by 57 minus theta of surrounding. ठीक है ना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, so this is 5 into 57 minus theta of surrounding is equals to 3 into 65 minus theta of surrounding. I hope you can do this calculation. इसमें से आप निकाल लीजिए, that will give me the answer for the surrounding. I am leaving the calculation free. ठीक है ना, आ गया? Is it clear? Next question. A black body is at a temperature of, the black body is a temperature of 5760 Kelvin. The energy of radiation emitted by the body of wavelength at 200 nanometer is U1. At a wavelength of 500 nanometer, it is U2, and that of 1000 nanometer, it is U3. Wings constant there are 2.88 into 10 power 6 nanometer Kelvin. Which of the following is correct? So wings displacement में lambda into t will be equal to your constant, यानी wavelength will be equal to your that constant divided by temperature. Constant value कितना दे रखा है, 2.88 into 10 to the power 6 nanometer Kelvin divided by temperature. Temperature कितना दे रखा है बेटा आपने को, 5760 Kelvin. So we will get the wavelength for this. हाँ राधे, 500 के लिए 200, the energy of the radiation emitted by the body at a wavelength of 250 के लिए इसने दे रखा है U1 at a wavelength of 500 nanometer, यानी 500 nanometer के लिए U2 and 1000 nanometers के लिए आ गया U3. तो कितना आ रहा है देखिए, टेम्परेचर इसके पास ज्यादा है 5.8. एनर्जी विल बी, मैक्सिमम रेडिएशन की कितनी आ रही है देख लीजिए, उसके हिसाब से आप आंसर लिख सकते हो इसे.
दे रखा है 3 अपने को, लेकिन आ रहा कितना मैक्सिमम, ये देखो लैम्बडा मैक्स कितनी वैल्यू आ रही है अपने को, देखो उसके हिसाब से अपने को वहां से लिखना है। कितना आ रहा है बेटा? दिस विल बी कमिंग फॉर मी 500 नैनोमीटर्स। नहीं, U2 इज हाईएस्ट कंपेयर टू U1 एंड U3। अगर 1000 डाल के देखो बेसिकली टेम्परेचर, तो U2 विल बी ग्रेटर देन U1। ठीक है, I hope you can do this question better. A body cools from a temperature 3T to 2T, यानी 3T से it is going to 2T in a time of 10 minutes. Room temperature दे रखा है capital T. Assuming the Newton's laws of cooling is applicable, the temperature of the body at the end of next 10 minutes will be equal to your how much? Okay, I'll write the Newton's laws of cooling of formula. 3D minus 2T divided by your in 10 minutes by your 10 is equals to some constant हो गया K1, इन दोनों का एवरेज 3D प्लस ऑफ योर 2T डिवाइडेड बाय 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। सेकंड केस के लिए कितना हो रहा है? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट्स, द रूम टेम्परेचर एंड ऑलवेज द न्यूटन्स कूलिंग इज एप्लीकेबल, तो कितना हो जाएगा? ये 2T से होके हुए कुछ अदर टेम्परेचर पे जाएगा, वो होगा फाइनल। अपने को निकालना है T फाइनल ही निकालना है ना बेटा। So it is T minus 2 final divided by next 10 minutes मतलब 10, that is equals to your constant, that is nothing but equal to your K1 into your, ये कितना बन जाएगा बेटा? 2T plus of your T final divided by 2 minus of your T। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, बस अब दोनों को सॉल्व कर लो। कितना रहेगा? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, 3T minus 2T will be equal to how much will be T, this will be T divided by 10 divided by, ये कितना हो जाएगा? 2T minus T final divided by 10 is equals to, ये कितना हो जाएगा? K1 K1 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा इन दोनों के रेशियो में, 5T divided by 2, 5T divided by 2, 5T divided by 2 होता है ना, minus of your T divided by 2T plus of your T final divided by 2 minus of your T। इसको और कैसे कर सकता हूँ, देखो ऐसे कर ले, कुछ और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? देखो इसमें से ये C10 10 चले जाएगा, सो इट इज T डिवाइडेड बाय 2T माइनस ऑफ T फाइनल इज इक्वल्स टू, ये कैसे लिख सकता हूँ मैं? 5T माइनस ऑफ फीवर, ये हो गया 2T डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये कितना बन जाएगा बेटा? T और ये माइनस, ये फाइनल हो जाएगा, तो दिस विल बी T फाइनल डिवाइडेड बाय 2, ये बाय 2 कर दो तो पूरा A2 चले जाएगा, प्लस ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, T फाइनल बाई 2 हो गया। तो ये कितना बन जाएगा? T डिवाइडेड बाय 2T माइनस ऑफ T फाइनल इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 3T डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, दिस विल बी इक्वल टू योर T फाइनल डिवाइडेड बाय 2, A2 और A2 भी चले गए, तो यानी ये हो गया 3T डिवाइडेड बाय T फाइनल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेसिकली, तो ये कितना हो जाएगा? 3T और ये हो गया यहाँ पर T, हाँ तो ये T और ये T भी और कट जाएगा, तो T final is equals to 3 into 2T minus T final, and this will be equal to 60 minus 3T final। ठीक है ना? तो ये हो गया T final, ये माइनस इधर आ जाएगा, so this will become 4T final is equals to 60, 2 2s are 2 3s are, यानी 2T final is equals to 3T, and T final will be equal to 3T divided by 2, so this will be the answer। हाँ, so what will be the answer for this one? 3 by 2, ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। स्पेरिकल बॉडी, ब्लैक बॉडी ऑफ रेडियस, ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी कितनी होती है? 1 with a radius of 12 centimeter, radiates 450 watt power at 500 Kelvin. If radius is halved and the temperature is doubled, the power radiated in watt will be equal to how much? Energy is equals to sigma into A into T power 4। तो अगर मैं एरिया में लिख रहा हूँ तो सिग्मा दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई इंटू योर आर स्क्वायर इंटू टी पावर 4, यानी रेशियो में ले रहा हूँ E1 by E2 इज इक्वल्स टू
r1 whole square divided by r2 square into t1 to the power of 4 divided by t2 to the power of 4. यानी e1 divided by e2 will be equal to r1 by r2 का रेशियो कितना है बेटा? If radius is half, isn't it? First radius is right now for me 12 और उसके बाद उसका half यानी 6. 12 square divided by 6. इसकी वैल्यू कितनी आ रही है देख लीजिए बेटा. It will come out for me 4 into temperature. First one का temperature कितना है? 500 Kelvin radius and the temperature is doubled यानी 500 to the power of 4. उसके बाद double मतलब 1000 to the power of 4. ये 2 0 से 2 0 चला गया. So it is 4 into 5 to the power of 4 divided by 10 to the power of 4. ठीक है? See how much I'm getting. E1 की वैल्यू कितनी दे रखा है प्रॉब्लम में? 450. So it is 450 divided by E2 is equals to your 4 into 5 power 4 divided by 10 power 4. $500 Kelvin. 5 2 5 1 5 2 यानी ये बन जाएगा 4 into 2 to the power of 4 यानी 16. यानी this will be 4 1 4 4 so this will be equal to how much for me? 450. यहाँ लिख लो देखिए और एक पेन से लिखता हूँ. This will be your 450 divided by E2. देखो यहाँ पर 5 1 5 2 2 to the power of 4 हो जाएगा. 2 to the power of 4 is 16. So 4 and 4 4 4 16. So it is 1 by 4. So this will be equal to 1 by 4. Okay. तो E2 कितना हो जाएगा? E2 is equals to 4 into 45. 4 4 1 5 1800. E2 will be equal to your 4 into 450. ठीक है? D 1800. Clear? चलिए. Next one. The power radiated by a black body is P and it radiates maximum energy at a wavelength of lambda naught. If the temperature of the black body is not changed, so that it radiates a maximum energy at a wavelength of 3 by 4 times of lambda naught. The power radiated by it becomes n times of P. The value of n will be equal to your how much for देखो बेटा यहाँ पर डायरेक्टली विंग्स लॉ डिस्प्लेसमेंट को फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन. लैम्डा इनटू टी विल बी इक्वल टू योर कांस्टेंट, isn't it? So lambda 1 into your t1 will be equal to lambda 2 into t2. यानी lambda 1 की वैल्यू कितना दे रखा है? t0 into t that is equals to next one is becoming how much value? 3 by 4 times of lambda naught into your t2. Lambda naught will get cancelled. So t2 will be equal to 4 by 3 times of your t. Now from the Stephen's law we know that power is directly proportional to t to the power of 4. So p1 by p2 is equals to t1 by t2 to the power of 4. So that will be equal to how much? But t1 मान के चलो. T1 is nothing but T divided by T2 to the power of 4. तो कितना बन जाएगा बेटा? ये हो गया 3T2 is equals to 40, isn't it? यानी T by यानी this will become for me 3 by 4 is equals to T by T2. यानी this will be equal to 3 by 4 to the power of 4. ठीक है ना? The power is right now becoming for me n times. यानी P2 by P1 कर लो इसको. P2 by P1 will become for me. उसका उल्टा बन जाएगा 4 by 3 to the power of 4. ठीक है ना? So 4 to the power of 4 मतलब कितना हो जाएगा? 256 divided by 3 into 3 into 3 into 3 that will be equal to 81. तो कितना बन रहा है? 256 by 81. This will be the answer. तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा. फॉर्मूले बेस्ड ही है, ज्यादा कुछ नहीं है. और मैंने क्लास नोट्स के लिए नोट्स भेज दिए. जो लोग नोट्स नहीं लिखे वो लोग नोट्स लिख लीजिए. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए. थोड़ा एनसीईआरटी हुआ तो एक बार निकाल के आप लीजिए. ये वाला आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए बेटा. व्हेन ब्लैक बॉडी इज केप्ट इन अ कूलर टेम्परेचर, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो जब नेट लॉस कैसे निकलेंगे? नेट लॉस विल बी इक्वल टू योर q by t of a black body will be equal to a sigma t power 4 minus t naught to the power 4. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला. ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग के फॉर्मूले से रिलेशन. सही ग्राफ देखो बेटा, वेवलेंथ वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ, फ्रीक्वेंसी वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ, स्ट्रेट लाइन. और कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2.9
ऑफ योर -3। और ये तो एमिसिविटी स्टेफन पोस्टर्स मैंने बोला था। किरचॉफ लॉस का स्टेटमेंट थोड़ा आप एनसीईआरटी से एक बार निकाल के पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? एट ए गिवन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन विल बी इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। है ना, एट ए गिवन टेम्परेचर जितना ऑब्जर्व करेगा उतना एमिट करेगा, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए विल बी इक्वल टू स्मॉल ए, यानी एमिसिविटी ऑफ योर बॉडी डिवाइडेड बाय एमिटिविटी ऑफ द ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू ई ऑब्जर्व, यानी ए इज इक्वल टू हाउ मच, ई इन दोनों का रेशियो ले लो तो विल बी गेटिंग हियर E divided emissive power of your ordinary body will be equal to your emissive power of your black body. Second statement देख लीजिए बेटा, at a given temperature ratio of emissive power of your ordinary body to its coefficient of absorption is constant and it is equal to the emissive power of your perfectly black body at the temperature. ठीक है, और इसके लिए भी सेम कंडीशन है, बस इतना याद रख लीजिए, फॉर्मूला है emissivity will be equal to your Q times of it. For a perfect black body absorptivity is 1 and emissivity is also equal to 1. ठीक है, स्टीफन्स लॉ का तो फॉर्मूला याद है आप लोग, Q by T will be equal to sigma A T to the power of 4। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या हो जाएगा? एमिसिविटी आ जाएगी, इसलिए यूनिट्स वगैरह लिख लीजिए, बेसिकली हो जाते हैं। परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू 1, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए E। क्यों? ये तो मैंने करवा ही दिया था। एमिसिव पावर ऑफ योर ब्लैक बॉडी मतलब एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट